planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it should be done and by whom it should be done. हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम प्लानिंग की मीनिंग, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का क्या मतलब है। व्हेन वी से द टर्म प्लानिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लानिंग? सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from the different courses of action. प्लानिंग की डेफिनेशन यही बताई गई है कि आप पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जेक्टिव सेट की जाए। एक स्पेसिफिक जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसके लिए क्या समय सीमा है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा काम करना है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये समझा कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, अलग अलग फैक्टर्स के कारण चेंजेस होते रहते हैं, तो उसी तरीके से फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंजेस होते रहेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाएं वहाँ ऑब्जेक्टिव्स एक टाइम पीरियड के लिए सेट किए जाएं, ये ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या हो पहले तो ये तय करना, ये सेट करना। तो सेटिंग द राइट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी कंपनी में। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट हो, किस टाइम पीरियड के लिए सेट हो, ये मालूम हो। फिर उसके बाद फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, कौन से ऐसे कोर्सेज ऑफ एक्शन लिए जा सकते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। सो फॉर्मुलेट करना अलग अलग कोर्सेस जो हो सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेजमेंट ने जब ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन सेट, देन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव वेरियस अल्टरनेटिव्स which are available, which are possible alternatives to apply and to work on these objectives, which we call course of action. So out of the various course of actions which may be applied, one course of action should be selected and finalized. So ये best जो भी alternative है, जो course of action है, ये ऑर्गेनाइजेशन को तय करना है। और यहीं पे स्टूडेंट्स हमें प्लानिंग के मतलब को समझना है। ऑब्जेक्टिव आपने सही तय करना है और कोर्स ऑफ एक्शन चुनते हुए आपको ये देखना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं क्या कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझते हुए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, यानी यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर सकता है तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि वही कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई किया जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें वैरी करती हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट सूट करता है वो उसे चुनना है। और ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव होगा या नहीं होगा, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि आपने कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके का सेलेक्ट किया हुआ है। सो सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स है, इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आइए एक और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिया गया है हेनरी फायोल के द्वारा। उन्होंने क्या कहा प्लानिंग के बारे में? प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन। Planning is chalking out plan of action. That is the result envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through, the methods to use. तो इन्होंने ये कहा कि जो रिजल्ट परिकल्पित है, जिसकी परिकल्पना की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस रिजल्ट को अचीव करने के लाइन में, envisaged in the line of action, सो उस रिजल्ट को अचीव करने के लाइन में जो भी काम किया जाता है वो प्लानिंग के अंतर्गत होना चाहिए। और यही प्लानिंग का अर्थ है कि चॉकिंग आउट द प्लान ऑफ एक्शन,
यानी कौन सा हम प्लान ऑफ एक्शन लें जिससे कि जिस परिणाम की परिकल्पना हमने की है, मीन्स द रिजल्ट विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ envisaged, how to achieve that result. So planning basically is about chalking out the plan of action. So let us understand the features of planning. These are the important features which we have to study and understand, students. So one by one, let us see. Planning contributes to the objectives of the organization. Planning is the primary function of management. Planning is pervasive. Planning is futuristic, forward looking. Planning is continuous process, and it involves decision making, and planning is a mental exercise. So when we see the features of planning, we can very well understand that for any business to run successfully and profitably, it is very important that goals are set right. So in order to set the right goals for the organization, the process of planning, it becomes very important, and thus planning contributes towards setting the right goals, right objectives for the organization. Second thing is that planning is the primary function of management. So all the managers, they have to plan what should be done in the coming week, in the coming months, in the coming quarter, year. So depending upon the level of the management, when top management plans for a longer period of time, middle management a bit shorter, and lower management for day to day and weeks and months are planned. So planning, since it is done at all the levels in all the organizations, it becomes a pervasive process. So irrespective of the type of work the organization is doing, the type of business in which organization is operating, the location of the, irrespective of the location, geographical boundaries, planning is a pervasive process. It has to be done at all the levels in all the organizations. Without this, business will not run successfully. Planning is futuristic, and this is what the chapter becomes interesting and the process becomes challenging, because it is very difficult, students, to look forward. Nobody knows what is going to come in future. So making calculations about future, it is done by studying the history, means not the history exactly, means learning from the past experiences, history of that business, particular business, and based on the facts. So planning is always, means the decisions which are taken are on the basis of, and the plans which are made on the basis of the past experiences, the present facts, and on the basis of this calculations are made and speculations are made as to what will happen, what might happen in future. Planning is, so it is futuristic, forward looking, and it becomes very interesting. No, so if a company is doing good, it means plans are working, and plans are working means the management has been very successful in making right calculations of the future, right? Planning is a continuous process. So why it is continuous? Why it is continuous process? It is continuous because you have to always plan, because see, somebody has planned it for say a week, the lower level manager, for a month, for a quarter. He has to then start planning for the next month, next quarter, like this. So it is a continuous process. And the second reason why it is continuous process is that business environment is dynamic, and business environment always changes. So according to the changing business environment, plans are also, they need to be changed, and therefore it becomes a continuous process. Planning involves a lot of decision making, and it enables the managers to take decisions, because when you sit, you have various issues on which you have to take decisions. So decisions, all the decisions, like what will be done, who will do it, how it will be done, in which time frame it will be done, we studied the meaning. So everything, all the operations, all the methods, procedures, decisions are taken on all the aspects of running the business while during the course of planning. And planning is a mental exercise. So with all the features that we have studied, it is definitely a mental exercise. So it involves a good amount of
and we will see in the limitations. When in the next section we let us come to the limitations, there we will understand that how it is a mental exercise and what are the then factors associated with this mental exercise. Planning provides direction to the organization. एक बार आपके पास गोल होता है, गोल सेट हो जाता है, प्लान ऑफ एक्शन ये सेट हो जाता है, तो फिर सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अनुसार सब लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर प्लानिंग ना की जाए तो फिर क्या होगा, डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, डायरेक्शंस पता नहीं होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, वर्कर्स को, मैनेजर्स को, तो ये ठीक नहीं होगा। बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जितने भी मेंबर्स हैं सबके डायरेक्शंस, सबके एक्शंस गोल ओरिएंटेड हों। तो प्लानिंग से हमें ये मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है, इसलिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। सिंस प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, सो प्लानिंग ऑलवेज टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क दैट माइट कम इन फ्यूचर, और उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग की भी जाती है। तो इसके हिसाब से फिर अनसर्टेनिटीज़ जो फ्यूचर में हो सकती हैं उनको कम करने में काफ़ी सहायता मिलती है। अनसर्टेनिटीज़ को कम किया जा सकता है, उनकी वजह से जो नुकसान होने हैं उनको या तो रोका जा सकता है या फिर बहुत हद तक उसको रेगुलेट करके कम किया जा सकता है। सो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अगर सही तरीके से उनके प्लान ऑफ एक्शंस मालूम हो जो कि प्लानिंग से संभव है, और ये क्लियरली डिफाइंड हो कि हु विल डू व्हाट, तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन जो हो सकता है दैट कैन बी एक्चुअली स्टॉप्ड, दैट कैन बी प्रिवेंटेड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन नहीं होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ ओवरलैपिंग की संभावना नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक ही काम को दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीक़ों से कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग हो जाएगी। या एक ही एम्प्लॉई को डबल इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हो तो वहाँ भी वो जो एक्टिविटी होगी वो वेस्टफुल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रॉपर तरीके से काम डेलीगेट ही ना किया जा सका हो ड्यू टू द कन्फ्यूजन। तो व्हेन यू सिट एंड प्लान, things are very clear what should be done, who will do it, how it will be done, in which time frame it will be done. So all these things, when they are clear, there is no overlapping, there is no possibility for any kind of overlapping, and the wasteful activities will be prevented. So this is the importance, students. Planning promotes innovative ideas, as because planning is pervasive, it is carried out at all the levels in all the organizations. So planning becomes pervasive, and planning gives space for innovative ideas. So managers can think innovatively in their own domain, and they can come up with innovative ideas which will help the business to grow, and this will increase the efficiency, this will increase the effectiveness as well, and the overall management will be very good. So it gives this scope for innovation. तो हमेशा ही अच्छा है। Planning helps in decision making. Means you have facts. When you sit for planning, you sit with the facts, the experiences, the figures, the upcoming uncertainties, the upcoming risk factors in the business environment. So everything, the goals, the action plans, the procedures, everything is discussed. So when you do this, you take decisions on all the levels. Like you take decisions who will do what, you take the decision what will be the budget for each activity, what will be the procedure, what will be the processes to be followed. All these things when they are discussed, so decisions are made. So planning enables the managers to take right decisions, and decision making becomes you can say very effective when you sit for planning. And
the most important point, it establishes control. Like the people working in sales department of any organization, they have their monthly targets. These targets are actually fixed on the basis of plans that are created, that are made. So while the process of planning goes on, different deliverables, different targets for each department, for all the employees, they are set, and it happens at all the levels, like from top level, middle level, bottom level. So all the levels, the process of planning is done. So targets are defined and the standards are set. So it becomes then very convenient for the managers to regulate, to control, as because the standards have already been fixed for either be it sales, operations, marketing, production, any department you see. The targets when they are defined, they can take it as benchmark. They can then evaluate the performance of the workers of the organization. So students, we have understood the importance of planning. Now let us further move to the next section, that is limitations of planning. Let us see the limitations of planning. There are two categories in the limitations: internal limitations, external limitations. So internal limitations relate to the limitations which exist within the organization, within any organization. So what are these limitations and what are external limitations? Let us see them one by one. Internal limitations of planning are that it leads to rigidity. Once plans have been formulated, they have been finalized and documented, there can't be any changes. Means changes are not allowed on the level of managers. Managers are not supposed to change the plans. So many a times you will see that the junior level managers, the workers, they kind of complain that they do not get the seniors don't understand the ground realities, and there should be changes in the plans. But this is the limitation of planning, that whatever plan you make, when you implement it, you will find that some kind of changes are required, some kind of modifications are required when you start implementing it. But then this rigidity is always there, as because there is there is a system which exists along with plans, that plans, once plan have been made, there cannot be any changes to the plan. So managers are not supposed to change the plan. So this leads to rigidity. Rigidity will be there. Planning may not work in dynamic environment, like businesses which operate in the field of commodities, businesses which operate in the field of jewelries, gold and silver. You will see that prices, they fluctuate every day almost all. So there cannot be planning might not work there, where the business environment is very much dynamic. So this is also one of the limitations associated with planning. It reduces creativity. Like I said that once the plan has been made, there is no scope to change it. Means during the course of execution of the plans, the scope of creativity, it is not very much. So it is not there. So it reduces the creativity. Whose creativity? Means those who work on plans. While making the plans, there is innovation. So you will have to understand this, that while you sit for making plans, there is a good amount of good scope for innovation, and innovative ideas can be welcomed. But once you have finalized the plan, there you cannot be so much creative. It involves huge cost. The reason being that whenever planning is done, the managers, they are supposed to sit for planning. Both these points are interrelated: time consuming and huge cost. Why it is costly? Because sometimes in bigger projects, planning goes on for months and months. So no work is done during that time, and employees, they are getting the, so cost to the company is quite high. Planning is thus a costly affair. So, but since it is important, therefore this cost has to be incurred by the organizations. Planning is time consuming as well. As I said that there are many projects, big projects, which demand a lot of planning and a good amount of time
it is devoted to planning. Means it can be 6 months, it can be more than a year. So this is how it goes, depending upon the scale and size of the project. And the last thing is that planning doesn't guarantee success. Means nobody can complain that हमने बहुत प्लान किया था तो अभी फेलियर कैसे हो गया. So you cannot say this because plans might not work. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्लानिंग की इंटरनल लिमिटेशंस को बताती हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स. हम पॉइंट्स को लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे. रिजिडिटी, डायनेमिक इन्वायरमेंट, द प्लान विल नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, it involves huge cost, it is time consuming process, and planning does not guarantee success. Now let us move to the external factors, external limitations of planning. So these are the external limitations, students. Natural calamities, they bring a lot of obstruction to plans. Changes in the competitors policy, in case it happens, the plan will suffer good level of challenges and will require to be changed. Change in the market trend can be understood by this. The one example, at one point of time in our country, the market of scooters was very big and Bajaj was one of the leading. Means it had monopoly in that market, the scooters market. But the trends changed as soon as 4-stroke motorcycles started coming with Hero Honda. So trends, there was a trend change in the market. Means people started going for motorcycles, and that was a time when Bajaj had to suffer. And then years later, Bajaj came with the idea of coming up with motorcycles, and started initially it had collaboration with Bajaj Kawasaki. So Kawasaki was a company, foreign company with which it had collaborated. एंड बहुत सालों के बाद वो खुद से उन्होंने बनाया पल्सर, और तब मोटरसाइकिल सेगमेंट में उन्होंने फिर से एक इस सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया. सो मार्केट ट्रेंड में बदलाव आने के कारण भी प्लान्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है. देन चेंज इन टेक्नोलॉजीज़. नाउ businesses and plans, they suffer good amount of losses, and this is one of the external limitations that nobody has control, no organization has control over the technology. So once there is change in technology, the organization, the plans, they suffer. So, and change in government policy, as we saw that many of the companies, they suffered good challenges in terms of operations, operating the business after introduction of GST in our country. So government policies, when they change, plans, they suffer. So these are the external limitations. We have covered the limitations part as well. आज के सेक्शन में हम लोगों को ये समझना था कि प्लानिंग, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग. हम लोगों ने अलग अलग तरीके से प्लानिंग के मतलब को समझा. हम लोगों ने ये समझा कि प्लानिंग की फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. बिज़नेस में प्लानिंग का क्या रोल हो सकता है, प्लानिंग के लिमिटेशंस कहाँ तक हैं. और आज की क्लास में इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, आप लोग यू कैन प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस करें, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं.